to sustain its momentum, surpassing all projections. Headline inflation has eased to 5.1% during both January and February. And this has come down to 5.1% in these 2 months from the earlier peak of 5.7% in the month of December. Core inflation has also declined steadily over the past 9 months to its lowest level in the series. The fuel component of CPI remained in deflation for 6 consecutive months. Food inflation pressures, however, accentuated in February. Looking ahead, robust growth prospects provide the policy space to remain focused on inflation and ensure its descent to the target of 4%. As the uncertainties in food prices continue to pose challenges, the MPC remains vigilant to the upside risks to inflation that may derail the path of disinflation. Under these circumstances, monetary policy must continue to be actively disinflationary to ensure anchoring of inflation expectations and fuller transmission of the past monetary policy actions. The MPC therefore decided to keep the policy rate unchanged at 6.5% in this meeting and also remain focused on withdrawal of accommodation. The MPC will remain resolute in its commitment to aligning inflation to the target. I would now like to provide an assessment of growth and inflation, and I will begin with the scenario relating to global growth. The global economy has remained resilient with a stable outlook as reflected in various high-frequency indicators. Now, in my statement, whatever I am saying, it is backed up with a lot of data which are there in the footnotes. So those of you who are interested could refer to this statement, which as usual will be uploaded in the RBI website immediately after this statement is over. So a lot of data backing up whatever I am saying is available in the various footnotes of my statement. You may like to refer to it. Let me start again on the global growth part. The global economy has remained resilient with a stable outlook as reflected in various high-frequency indicators. Global trade is expected to grow faster in 2024, although weaker than its historical average. Inflation is moving closer to targets, but the last mile of disinflation is turning out to be challenging. Services inflation in advanced economies remains sticky amidst tight labor markets. Accordingly, central banks are cautious in their communications, thereby tempering market expectations about the timing and magnitude of interest rate cuts later during this year. Equity markets have gained while bond yields and the US dollar have remained volatile. The overall outlook is challenged by continuing geopolitical conflicts, disruptions in trade routes, and high public debt burden. In the last monetary policy statement, if you recall, I had expressed concerns about the high levels of public debt in both advanced and emerging market economies, that is the EMEs. These are dormant risks which could erupt abruptly. Debt to GDP ratio, which rose during the pandemic, remain elevated and are projected to increase further with rising interest burden and cost of borrowing, thus raising debt sustainability concerns. Worsening debt situation in advanced economies, in particular, can generate spillovers for the emerging market economies in the form of swings in capital flows and volatility in financial markets. The emerging market economies with rising levels of public debt in particular would be vulnerable to these spillover effects. Credible fiscal consolidation plans, particularly in major advanced economies, focusing on growth-enhancing investment would be necessary to address this challenge, not only for themselves, but also I think for the overall global economy. India, however, presents a different picture on account of its fiscal consolidation and faster GDP growth. Turning to domestic growth,
The domestic economic activity continues to expand at an accelerated pace, supported by fixed investment and improving global environment. The second advance estimates placed the real GDP growth at 7.6% for 2023-24, the third successive year of 7% or higher growth. From the supply side, industrial activity led by manufacturing continued its momentum. The Purchasing Managers Index, that is PMI for manufacturing, displayed a sustained expansion in both February and March, touching a 16-year high in the month of March. Services sector exhibited broad-based buoyancy, with all sectors within the services sector registering strong growth. The PMI services remained above 60 during February and March, suggesting sustained healthy expansion. With rural demand catching up, consumption is expected to support economic growth in 2024-25. Urban consumption stayed buoyant, as evident from various indicators. Details are given in the footnote. The resilience in cement production, together with strong growth in steel consumption and production and import of capital goods, augur well for the investment cycle to gain further traction. The total flow of resources to the commercial sector from banks and other sources at rupees 31.2 lakh crore, I repeat, at rupees 31.2 lakh crore during 2023-24 is significantly higher than that of the previous year, which was 26.4 lakh crore. External demand improved in February, with exports registering double-digit expansion. Trade deficit, however, widened in February as imports also accelerated. Going forward, the outlook for agriculture and rural activity appears bright, with good Rabi wheat crop and improved prospects of Kharif crops due to expected normal southwest monsoon. Strengthening of rural demand, improving employment conditions and informal sector activity, moderating inflationary pressures, and sustained momentum in manufacturing and services sector should boost private consumption. Let me read this sentence again because there are quite a few points in this. Strengthening of rural demand, improving employment conditions and informal sector activity, moderating inflationary pressures, and sustained momentum in manufacturing and services sector should boost private consumption. As per our survey, consumer confidence 1 year ahead reached a new high. The prospects of investment activity remained bright owing to upturn in private capex cycle becoming steadily broad-based. Persisting let me just rephrase it. The prospects of investment activity remain bright owing to upturn in private capex cycle becoming steadily broad-based, persisting and robust government capital expenditure, healthy balance sheets of banks and corporates, and rising capacity utilization, and finally strengthening business optimism as reflected in our surveys. I think the sentence is a bit long. It's better that I read it out again for greater clarity. And sorry about that, but I think it provides greater clarity. The prospects of investment activity remain bright owing to upturn in private capex cycle becoming steadily broad-based, persisting and robust government capital expenditure, healthy balance sheets of banks and corporates, rising capacity utilization, especially in the manufacturing sector, and strengthening business optimism as reflected in our surveys. Improving global growth and trade prospects, coupled with our rising integration in global supply chains, are expected to propel external demand for goods and services. The headwinds from protracted geopolitical tensions and increasing disruptions in trade routes, however, pose risks to the overall outlook. Taking all these factors into consideration,
the real GDP growth for the current financial year 2024-25, which started on 1st April, the real GDP growth for 24-25 is projected at 7%, with Q1 at 7.1%, Q2 at 6.9%, and both Q3 and Q4 at 7% each. The risks are evenly balanced. Turning to inflation, food price uncertainties continue to weigh on the inflation trajectory going forward. A record Rabi wheat production would help temper price pressures and replenish the buffer stocks. As you would recall, the buffer stocks had slightly dipped, but I think the record Rabi production of wheat is expected to replenish whatever depletion had taken place. Moreover, early indication of a normal monsoon augurs well for the Kharif season. International food prices also remain benign. The tight demand-supply situation in certain categories of pulses and the production outcomes of key vegetables warrant close monitoring, especially in the background of the forecast of above normal temperatures in the coming months. And these above normal temperatures, as per the current forecast, are expected to prevail in April, May and June, and not beyond June. That is the current forecast. Frequent and overlapping adverse climate shocks pose upside risks to the outlook on international and domestic food prices. Cost push pressures faced by firms are seeing an upward bias after a period of sustained moderation. Deflation in fuel is likely to deepen in the near term, following the cut in LPG prices in the month of March. Notwithstanding the cut in petrol and diesel prices in mid-March, the recent uptick in crude oil prices, especially in the recent few days, they need to be very closely monitored. Continuing geopolitical tensions also pose upside risk to commodity prices and supply chains. Assuming a normal monsoon next year, CPI inflation for, when I say normal monsoon for next year, I mean the current year 24-25. CPI inflation for the current year 24-25 is projected at 4.5%. I repeat, CPI inflation for the current year 24-25 is projected at 4.5%, with Q1 at 4.9%, Q2 at 3.8%, Q3 at 4.6%, and Q4 at 4.5%. The risks are evenly balanced. Now, what do these inflation and growth conditions mean for monetary policy? I have explained the growth situation, I have explained the inflation scenario. Synthesizing everything, what does it mean? What implications it has for monetary policy, and that is precisely what I would like to explain now. Inflation has come down significantly but remains above the 4% target. Food inflation continues to exhibit considerable volatility, which is impeding the ongoing disinflation process. High and persistent food inflation could unhinge anchoring of inflation expectations, which is underway. Our ongoing effort is to ensure fuller transmission of policy actions and anchoring of household inflation expectations. The strong growth momentum, together with our GDP projections for 24-25, give us the policy space to unwaveringly focus on price stability. Now, 2 years ago, around this time, when CPI inflation had peaked at 7.8% in April 2022, the elephant in the room was inflation. The elephant has now gone out for a walk and appears to be returning to the forest. We would like the elephant to return to the forest and remain there on a durable basis. In other words, it is essential in the best interest of the economy that CPI inflation continues to moderate and aligns to the target on a durable basis. Till this is achieved, our task remains unfinished. The success
in the disinflation process so far should not distract us from vulnerability of the inflation trajectory to the frequent incidence of supply side shocks. Our effort is to ensure price stability on an enduring basis, paving the way for sustained period of high growth. I would now like to turn to the aspect of liquidity and financial market conditions. In the February monetary policy statement, if you recall, I had mentioned that liquidity conditions were driven by exogenous factors which were likely to correct in the foreseeable future. Liquidity conditions eased during February and March in the wake of increased government spending, Reserve Bank's market operations, and the return leg of US dollar and Indian rupee sale by swap auction, which had been done earlier in 2022. In particular, liquidity situation improved in March with system liquidity turning intermittently surplus in the first half of the month. In these circumstances, the Reserve Bank conducted 14 fine-tuning variable rate repo operations, that is VRRR operations during February and early March to absorb intermittent surplus liquidity. Anticipating the seasonal tightening of liquidity at end March, the Reserve Bank injected liquidity through variable rate, that is VRR operations, both main and fine-tuning operations. Consequently, the average borrowings under the MSF window moderated. Liquidity conditions have, however, again turned surplus from March 30th, necessitating VRR auctions from 2nd of April. So you would have noticed in the last 2-3 days, we have been conducting more than one VRRR auctions. On 2nd April, then again we did it on 3rd April. So last 2-3 days we have been doing it. And today, as you know, there is a variable rate, there is a what you call, as per our cycle, we are doing VRR operation for 14 days, a VRRR operation for 14 days. Now, reflecting these liquidity developments, the weighted average call rate, that is WACR, exhibited a softening bias and has hovered near the repo rate since the last policy meeting. In tandem, rates in the collateralized segment of the call money market have also softened. Financial conditions remained conducive as reflected in reduced term spread in the GSEC market and stable risk premium in the bond market. In the credit market, monetary transmission continues to be work in progress. Looking ahead, the Reserve Bank will remain nimble and flexible in its liquidity management through both main and fine-tuning operations in both repo and reverse repo. We will deploy an appropriate mix of instruments to modulate both frictional and durable liquidity so as to ensure that money market interest rates evolve in an orderly manner that preserves financial stability. The Indian rupee has remained largely range-bound as compared to both its emerging market peers and a few advanced economies during the financial year 2023-24, that is till 31st March last. The Indian rupee was the most stable among major currencies during this period. This is very important. The Indian rupee was the most stable among major currencies during this period. As compared to previous 3 years, the Indian rupee exhibited lowest volatility in 2023-24. The relative stability of the Indian rupee, which I just mentioned, it reflects, I would emphasize, the relative stability of the Indian rupee reflects India's sound macroeconomic fundamentals, financial stability, and improvements in our external position. Turning to financial stability, let me say that latest data as at end December 2023 show that the key indicators of capital and asset quality of scheduled commercial banks continued to be healthy. The financial indicators of non-banking financial companies, that is NBFCs, are also in line with that of the banking system as per the latest data available. Let me emphasize here that
banks, NBFCs and other financial entities must continue to give highest priority to quality of governance and adherence to regulatory guidelines. Financial sector players by and large operate with public money, be it of depositors in banks and select NBFCs or investors in bonds and other financial instruments. They should always be mindful of this aspect. The Reserve Bank will continue to constructively engage with financial entities in this regard. It needs to be recognized that financial stability is a joint responsibility of all stakeholders. The Reserve Bank has also been engaging with the regulated entities and various stakeholders for simplifying its regulations and reducing compliance burden. As part of this endeavor, the recommendations of the Regulations Review Authority RRA 2.0 constituted by the Reserve Bank have been largely implemented. The RRA 2.0 has set a new benchmark for meaningful engagement between the regulator and the regulated entities. Moving further in the same direction, internal review groups within RBI were formed in 2023 to rationalize, simplify and remove obsolete regulations and streamline the reporting mechanism. In pursuance of the recommendations of the RRA 2.0, that is the Regulations Review Authority which was constituted by the RBI. So in pursuance of the recommendations of the RRA 2.0 and the internal review groups which we constituted in 2023, more than 1,000 circulars have been withdrawn. A master direction for rationalizing and harmonizing supervisory returns has also been issued. The Reserve Bank will continue to follow a consultative approach and undertake review of regulations in line with the evolving financial landscape. Turning to external sector, during the first 3 quarters of 23-24, India's current account deficit narrowed significantly on account of a moderation in merchandise trade deficit, coupled with robust growth in services exports and strong remittances. India's merchandise and services exports have grown at a healthy pace in the 4th quarter of 23-24. India continues to be the largest recipient of remittances in the world. The cost of receiving remittances is gradually coming down. Overall, the current account deficit for 2024-25 is expected to remain at a level that is both viable and eminently manageable. On the external financing side, India's foreign portfolio investment, that is FPI flows, saw a significant turnaround in 23-24. Net FPI inflows stood at $41.6 billion during 23-24, as against net outflows in the preceding 2 years, which were in the order of 14.1 billion outflow in 21-22 and 4.8 billion outflow in 22-23. This is the second highest level of FPI inflow after 23-24. Net foreign direct investment moderated to $14.2 billion in April-January 23-24 from 25 billion a year ago. External commercial borrowings, that is ECBs, and non-resident deposits recorded higher net inflows compared to the previous year. The amount of ECB agreements also grew markedly in 2023-24 up to February 24. Now all this data is given, details are given in the footnote. India's foreign exchange reserves reached an all-time high of $645.6 billion as of March 29th this year, March 29, 2024. I repeat, India's foreign exchange reserves reached an all-time high of $645.6 billion as of March 29, 2024. Latest data on various external vulnerability indicators suggest improved resilience of India's external sector. We remain confident of
meeting our external financing requirements comfortably. Now, talking about the forex reserves, I recall that in 2021, our forex reserves had also reached 642 plus billion US dollars. Then following the commencement of the war in Ukraine and the outflow of dollar from India as well as from several other countries on safe haven demand, there were concerns that forex reserves of India was going down, and at one point it had gone down. Our forex reserves had gone down to about $524 billion. And at that time, I think several questions were raised about, what was RBI doing, whether RBI was on the right track. If you recall, at that time, we had very clearly assured that the decline in forex reserves was partly due to, the change in valuations of our assets, and also partly due to our intervention in the market to ensure an orderly depreciation of the rupee, which is a part of our policy, ensuring orderly depreciation or orderly appreciation. And we had that time very clearly and firmly stated that we are using our forex reserves in a very judicious manner. It was a strong umbrella which we had built up, and we are using it because it was raining heavily. And we were mindful of what we were doing. We knew what is our purpose and in which direction we are moving. And as you would see, now the reserves have again risen, and they stand at an all-time high of 642.6 billion US dollars, 645.6 billion as of 29th March. So, this is one area on which the Reserve Bank remains committed. Number one, to sort of ensure that, the exchange rate of the rupee is market determined. There are inflows and outflows of dollars happening, but it is our focus, it is our prime focus to build up a strong umbrella, a strong buffer in the form of a substantial quantum of forex reserves, which will help us when the cycle turns or when it rains heavily. So let me move forward. Sorry for that digression, but I thought it was necessary to set the record straight. I shall now announce certain additional measures. The first announcement relates to trading of sovereign green bonds in the International Financial Services Center, IFSC. With a view to facilitating wider non-resident participation in sovereign green bonds, a scheme for investment and trading in these bonds in the IFSC will be notified very shortly. The second announcement relates to the RBI Retail Direct Scheme and introduction of a mobile app to operate in the RBI Retail Direct Scheme. The Reserve Bank Retail Direct Scheme was launched in November 2021 for enabling the retail investors to participate in the GSEC market, both in the primary as well as in the secondary market auctions and operations. It is now proposed to launch a mobile app for accessing the Retail Direct portal. This will be of great convenience to retail investors and deepen the GSEC market further. The next announcement relates to review of liquidity coverage ratio, that is LCR framework. Technological developments have enabled bank customers to instantly withdraw or transfer money from their bank accounts. While improving customer convenience, this has also created challenges for banks to deal with potential situations when, due to certain factors, a large number of depositors decide to instantly and simultaneously withdraw their money from the banks. The developments in certain advanced jurisdictions during the last year demonstrated the difficulties it can create for banks. The difficulties it can create for banks to deal with such situations when there is heavy outflow of, heavy outflow or transfer of deposits. And this happens only if that particular bank is in an acute stress. It's not a normal thing which happens, but then the banks will have to remain prepared for all eventualities. A need has therefore arisen to undertake a comprehensive review of the LCR framework for banks. A draft circular will be issued shortly for stakeholder consultation. Our approach is to have a balanced approach, and as I said a little while ago, we follow consultative approach, so therefore the draft circular will enable
the stakeholders and the banks to give their views and opinions and suggestions, which will be taken into consideration by the Reserve Bank before arriving at a final decision. The next announcement relates to dealing in rupee interest rate derivative products for small finance banks. At present, small finance banks are permitted to use only interest rate futures for proprietary hedging. It has now been decided to allow small finance banks to use permissible rupee interest derivative products. This will allow further flexibility to small finance banks for hedging their interest rate risk and enhancing their resilience. The next announcement relates to enabling UPI for cash deposit facility. Deposit of cash through cash deposit machines, that is CDMs, is primarily being done through the use of debit cards. Given the experience gained from cardless cash withdrawal using UPI at the ATMs, it is now proposed to facilitate deposit of cash in CDMs, that is in the cash deposit machines, using UPI. This measure will further enhance customer convenience and make currency handling process at banks more efficient. And the next announcement relates to, I have two more announcements and I shall be quick. Next announcement relates to UPI access for prepaid instruments through third-party apps. At present, UPI payments from prepaid payment instruments, that is PPIs, can be made only by using the web or mobile app provided by the PPI issuer itself. It is now proposed to permit the use of third-party UPI apps for making UPI payments from these PPI wallets. That means the PPI wallet holders no longer have to be completely dependent on the PPI issuer, but they can use any other third-party app which is operating under the UPI. This will further enhance customer convenience and boost adoption of digital payments for small value transactions. And the final announcement relates to distribution of central bank digital currency, that is CBDC, the e-rupee, through non-bank payment system operators. The CBDC pilots are currently in operation with increasing number of use cases and participating banks. It is proposed to make CBDC retail accessible to a broader segment of users by enabling non-bank payment system operators to offer CBDC wallets. This will facilitate testing of resiliency of the CBDC platform to handle multi-channel transactions. Let me now conclude, and I would like to state that as we progress towards RBI at 100, the upcoming decade is going to be a transformational journey. The Reserve Bank will continue to focus on preserving financial stability and promoting a system that is robust, resilient, and future ready. And it will be robust, resilient, and future ready to support economic growth. Price stability will be a key component of this endeavor. Turning to the present, inflation is on a declining trajectory and GDP growth is buoyant. At this juncture, we should not lower our guard but continue to work towards ensuring that inflation aligns durably and sustainably to the target. Our goal is in sight and we must remain vigilant. We are inspired by the profound words of Mahatma Gandhi, and I quote, "One must persevere and have patience. Success is the inevitable result of such effort." Thank you. Namaskar. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास साहब पॉलिसी पेश करते हुए पॉलिसी बिल्कुल उम्मीदों के मुताबिक रही है। बाजार के लिए ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, और ना नेगेटिव तो पॉजिटिव ही समझी जाए, क्योंकि आरबीआई गवर्नर ने अपने स्टैंड में, अपने कमेंट्री में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है। बता दूं आपको कि किस तरह की खास बातें गवर्नर साहब की तरफ से आती दिखी है। आज की पॉलिसी की सबसे बड़ी बात है, पहली बात, आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। पॉलिसी दर 6.5% के आसपास 6.5% पर स्थिर रखी है, और ये 7वीं बार है जब 6.5% पर ब्याज दरें स्थिर रही है, 7वीं बार पोज दिया है। एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इनके 6 में से 5 सदस्यों ने दरों को स्थिर रखने के पक्ष में वोट दिया है, और साथ ही 6 में से 5 सदस्य ये भी चाहते हैं कि वो
अकोमोडेटिव रुख हम धीमे धीमे वापस जो ले रहे हैं वो बिल्कुल सही है। पिछली पॉलिसी में भी यही कहा था, इस पॉलिसी में भी यही है। अब आइए महंगाई को लेकर क्या कहना है आरबीआई का। महंगाई लक्ष्य के पास पहुंच रही है, लेकिन अभी भी खाने पीने की चीजों की महंगाई चुनौती बनी हुई है आरबीआई के लिए। वित्त वर्ष 2025 का जीडीपी का आंकड़ा, जो ग्रोथ का अनुमान है, वो 7% पर बरकरार रखा है। इसमें किसी तरह का कोई बदलाव गवर्नर साहब ने किया नहीं है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन से कमोडिटीज की कीमतों में जो उछाल आया, उस पर गवर्नर साहब की नजर है और उन्हें डर है ये अभी थोड़ा और आगे रह भी सकता है, ये ध्यान में रखिए। वित्त वर्ष 2025 में जो महंगाई का आंकड़ा है 4.5% पर उन्होंने बरकरार रखा है। इसमें किसी तरह की कटौती नहीं की है। और वित्त वर्ष 2025 में दूसरी तीसरी तिमाही के लिए उन्होंने महंगाई के अनुमान थोड़े से घटाए जरूर हैं, 20-20 बेसिस पॉइंट से घटाए हैं। इसके अलावा वित्त वर्ष 2025 के लिए यह अनुमान घटाने के बाद देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये आखिरी जो बड़ी बात उन्होंने कही है, रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर 645 बिलियन डॉलर। ढेर सारा पैसा है हमारे पास, बहुत सारा पैसा है। ये गवर्नर साहब ने आज खजाना बताया है, उसका नंबर बताया। आइए, इस पॉलिसी के बाद एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है। पॉलिसी का विश्लेषण करने के लिए बग्गा साहब है, शौकत भट्टाचार्य साहब हैं, सेठी साहब, जय ठक्कर और बाकी हमारे सारे मेहमान भी हमारे साथ हैं। बग्गा साहब, शुरुआत आपसे ही करते हैं। कोई सरप्राइज या शौक? नहीं, कोई सरप्राइज नहीं। ओके, तभी आप वैसे के वैसे ही आराम से चाय की चुस्कियां ले रहे थे। मतलब पॉलिसी आई और गई काइंड ऑफ। और 5/5 हमारा सब फोरकास्ट बिल्कुल ठीक था। जो सौगत दादा और हम कह रहे थे अनिल जी, महात्मा गांधी का कोट आया, इन्फ्लेशन काबू में है, जीडीपी ग्रोथ अच्छी है, 7% बरकरार रखा। उन्होंने विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन रहा स्टांस। और देखिए, ये हम कहना चाहेंगे दर्शकों को, आप रेट कट बोले जा रहे हैं, रेट कट आपको कब दिखेगा? पहले वो न्यूट्रल बनेंगे पॉलिसी में, फिर कटौती आएगी। सीधा विड्रॉल से, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी से आप कटौती नहीं करेंगे। तो हमें पता लग जाएगा एक पॉलिसी पहले। 6 पॉलिसियां होनी है साल में अनिल जी। अब अगली जून में तो कुछ नहीं होना, क्योंकि फेड के 1 हफ्ता पहले हैं। करेक्ट। तो वो कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद अगस्त की पॉलिसी जब आएगी, सितंबर अगस्त की जो पॉलिसी है, उसमें अगर न्यूट्रल होते हैं तब आपको पता लग जाएगा अक्टूबर में रेट कट आ रहा है। ठीक बात है। शौकत सर, जो बग्गा साहब इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि जैसा 5 में से 5 बातें जो आपने और बग्गा साहब ने सोची थी, वो गवर्नर साहब ने वैसी की वैसी मानी। इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि पॉलिसी हमने ही बनाई है। लेकिन क्या लगता है सर, एकदम इनलाइन पॉलिसी, आपको क्या खास बातें लगी? पहला तो है ये इन्फ्लेशन का, मुझे थोड़ा सा देखना है ये नंबर। वो साल के लिए 4.5 मेंटेन किया है, लेकिन हर क्वार्टर के जो नंबर्स जो दिए गए हैं, वो फरवरी महीने के जो नंबर्स थे, इससे 1% या 2% कम है। कैसे होता है ये मुझे समझ में नहीं आया, ये मुझे चेक करना होगा। ये नंबर 1। हाँ, कि जितने जो क्वार्टर बाय क्वार्टर जो नंबर दिए हैं, वो पिछले फरवरी महीने के जो नंबर्स थे, उससे 1 या 2 बेसिस पॉइंट कम है। हाँ, सो वो कैसे बना तो ये पता नहीं। सेकंड बात जो है, ये बहुत अभी भी टोन बहुत हॉकिश है। हाँ, एक के बाद एक बोलते रहे हैं। आपने और अजय साहब ने भी सुना होगा, रोबस्ट इकोनॉमी अलाउज फोकस ऑन इन्फ्लेशन, actively disinflationary policy stands to anchor inflation expectations. The last mile is challenging. The policy space for the RBI has policy space to unwaveringly focus on price stability. हर बार मैंने हर 5-5 मिनट में ये वो प्राइस स्टेबिलिटी पे फोकस पे वो नजरिया देते रहे हैं। तो ये 2 चीज है। बाकी रहा, हम वही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनके जो दूसरे रेगुलेटरी पॉलिसीज हैं और बैंक्स के क्रेडिट को कमाने के लिए और कुछ करेंगे कि नहीं, वो प्रूडेंशियल मेजर्स कोई नए मेजर्स नहीं अनाउंस किए। तो ये सारे मैंने, दिस इज द ब्रॉड, जितना जो रहा है ये मैंने ब्रॉड टेक अवेज फ्रॉम द पॉलिसी। ओके, परफेक्ट। ये है आपके लिए पॉलिसी पर पूरे की पूरी राय। आइए एक बार जरा बाजार के लिहाज से भी पॉलिसी समझी जाए। 22,500 के आसपास निफ्टी है, डे हाई के आसपास है। बैंक निफ्टी 48,150 के आसपास है, डे हाई के आसपास ट्रेड करे तो अच्छे हैं मार्केट। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में मजबूती पिछले कुछ मिनटों में तेजी से बढ़ती हुई दिखी, यानी कि ब्रॉडर मार्केट में माहौल खरीदारी का बनता हुआ दिख रहा है। बाजार के लिहाज से सेठी साहब को पॉलिसी कैसी लग रही है? सेठी साहब बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, जैसे मैंने पॉलिसी के पहले भी कहा था, एक नॉन इवेंट है और पॉलिसी के दौरान भी पूरी पॉलिसी इतनी देर आरबीआई गवर्नर बोले, बट 15-20 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी में कोई ऊपर नीचे हुआ ही नहीं है। तो पॉलिसी
विदाउट पॉलिसी कुछ बाजार को है नहीं। बाकी बाजार एक अच्छी ट्रेजेक्टरी में अच्छे स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड कर रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि कल हमने यूएस में इतनी भारी गिरावट देखी है। हमारे बाजार को कोई फिक्र नहीं है, और खास करके ब्रॉडर मार्केट्स में तो बिल्कुल तेजी चल रही है। और इवन लार्ज कैप्स में भी लेड बाय बैंकिंग स्टॉक्स, एचडीएफसी बैंक अच्छा कर रहा है। मुझे लगता है बाजार में तेजी में ही रहना चाहिए, और जिनके पास जो पोजीशन है वो तो बिल्कुल होल्ड ही करनी है। बाकी कोई कारण से कोई गिरावट आती है तो डेफिनेटली खरीदारी करने के मौके ढूंढे। और यहाँ से भी मुझे लगता है इस क्वार्टर में बैंकिंग रिजल्ट्स अच्छे होंगे। तो जैसे 2-4 नाम जो बैंकिंग स्टॉक्स के, आपका भी एक पसंदीदा या आपने भी कई बार रिकमेंडेड स्टॉक है, कैनरा बैंक बहुत अच्छा लगता है। हालांकि अब 620 के लेवल पे आ गया, हम बातें करते थे 560-570 के लेवल से, अब 620 हो गया। बट यहाँ पे भी वो लगता है होल्ड करना चाहिए। एक तो स्टॉक स्प्लिट उसमें पेंडिंग है, और बाकी एचडीएफसी बैंक में नीचे से अच्छी तेजी हुई है। आई लाइक इवन कोटक, एक्सिस बैंक, दोनों में अच्छी तेजी लग रही है। और बाकी भी जो छोटे वाले पीएसयू बैंक्स हैं जैसे पीएनबी, बीओबी, मतलब छोटे प्राइस वाले, ऐसे मार्केट कैप के हिसाब से हो सकता है दूसरे तीसरे नंबर पे होंगे विद इन पीएसयू बैंकिंग स्पेस। बट मुझे लगता है ये सब अच्छा करेंगे। और जो रेट सेंसिटिव बाकी के भी सेक्टर्स हैं जिनमें जैसे रियल एस्टेट स्टॉक्स है, डीएलएफ है, ओबेरॉय रियल्टी, ये सब भी अच्छे लग रहे हैं। तो ऑल इन ऑल बाजार पे बुलिश हूँ, होल्ड करना है, और गिरावट का अगर कोई गिरावट आती है तो खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। ओके। इतने सारे बैंक खरीदने के लिए पैसे थोड़ी होंगे आपके पास सही साहब। आपको सारे एचडीएफसी से लेके सारे बैंक पर, क्या एक शॉर्टकट है मेरे पास में, अगर आप चाहें तो मैं बताऊं? हाँ बिल्कुल, बताइए अनिल जी। आरबीआई को लिस्ट करा दें क्या? एक आरबीआई को लिस्ट करा दें, फिर आपको एक ही खरीदना पड़ेगा। और सोना भी बहुत है उनके पास। हाँ, उनके पास गोल्ड भी बहुत सारा पड़ा है। तो रोज गोल्ड के भाव 10% बढ़ गए तो चलो आरबीआई की वैल्यू बढ़ी। आजकल एलआईसी का तो वैसे ही हो रहा है ना, एलआईसी के पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ रही है वैसे। चलिए, लेकिन बाजार के लिहाज से पॉलिसी है बेहतर। अच्छा स्वागत सर, अब आप उस बात पे कायम है कि जो पहली कटौती आएगी वो अक्टूबर में ही होगी? ये मैंने बोलना नहीं चाहिए, मैंने मेरा तो अंदाजा है कि दिसंबर के पहले नहीं होने वाला। अच्छा। जो जिस तरीके से देख रहे, देखिए मैंने जो होता है, वो बार बार कह रहे हैं कि वो एलिफेंट इन द रूम, बहुत वो एनालॉजी लगाए हैं कि वो जंगल में जाके वहां पे रहेंगे, जंगल में वापस नहीं आएंगे। वो बहुत एम्फेसिस से बोले हैं। उनके साथ इनके फोरकास्ट देखिए। हाँ, मैंने एलिफेंट इन द रूम माने इन्फ्लेशन को 4% पहुंचना। हाँ, और उनके इन्फ्लेशन नंबर्स देखिए, 4.9, 3.8, 4.6, 4.5, 4 के आसपास भी नहीं। हाँ, तो मैंने ये इन्फ्लेशन रहा कि किस मुंह से वो कहेंगे कि अभी 4.5 रहा तो अभी रेट काटेंगे। हाँ, तो मैंने तो मेरा तो अंदाजा है कि और बढ़ गया साइड में। और दूसरा है जो आप पहले पूछ रहे थे कि वो ग्लोबल इकोनॉमी में ग्लोबल फैक्टर्स को क्या इन्फ्लुएंस करेंगे। मैं भी भूल गया था। वो पिछले बार वो जो ओवरऑल डेट सिचुएशन, डेट टू जीडीपी रेशियो की, वहां पे कोई बढ़ता हुआ है कि नहीं, चेंज है कि नहीं, वो भी एक और वो आ गया है कि हाई डेट सिचुएशन में मार्केट में वॉलेटिलिटी आ सकता है या कुछ हो सकता है। तो मेरा तो अंदाजा है कि अभी उन्हें हायर फॉर लॉन्गर अभी रहेगा, मैंने जल्दी करने वाले नहीं है। तीसरी चीज है जो लिक्विडिटी में, कुछ लिक्विडिटी में तो बोलते नहीं है कि क्या करेंगे, लेकिन मेरा अंदाजा है कि जो अजय साहब कह रहे थे कि स्लाइड डेफिसिट नहीं, लिक्विडिटी को स्लाइड सरप्लस रखेंगे इन लोग इस बार। हाँ, कि वो मैंने वो ताकि वो कॉल मार्केट रेट्स, छोटे टी बिल रेट्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट रेट, वो थोड़ा सा नीचे आए। तो वहां पे दैट्स द ओनली सिग्नल नाउ कि पॉलिसी में थोड़ा सा ईजिंग स्टैंस आ रहा है। उसके सिवाय और कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपने बताया। एक बार जरा जय से भी राय ली जाए बाजार पर पॉलिसी के बाद। जय बताइए। बिल्कुल अनिल जी, जैसे मैंने कहा कि निफ्टी तो काफी साइडवेज है ही, और अनिल जी वही रेंज में ट्रेड कर रहा है। बट बैंक निफ्टी के डेटा जो पॉलिसी के पहले अगर हम देखें तभी तो थोड़े बेटर थे ही, और थोड़े बेटर हुए भी है अनिल जी। तो 48,000 के लेवल्स को, जैसे मैंने कहा, मैं क्लोजली वॉच कर रहा था, तो वो लेवल्स को होल्ड आउट किया और उसके ऊपर अच्छा सस्टेन कर रहा है। बट ऑन द फ्लिप साइड अनिल जी, मैं ये भी कहूंगा कि ऊपर में 48,250 के जो लेवल्स है वो कहीं ना कहीं एक हर्डल भी है। तो यहाँ पे इस बाजार को इस तरह से ट्रेड किया जाए कि हम एक स्ट्रैटेजी इनिशिएट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, जिसे हम बुल कॉल स्प्रेड कहते हैं। अनिल जी, यहाँ पे 48,200 का एक कॉल ऑप्शन ले सकते हैं जो मिल रहा है 272 पर, और ऊपर में 48,500 जो नेक्स्ट हर्डल बनेगा उसका 152 पर कॉल ऑप्शन बेचे। तो नेट नेट आपकी लागत अनिल जी 120 रुपए की होगी, विच कैन बी द मैक्स लॉस अगर ये नीचे बंद होता है तो 48,200 के 3 अप्रैल तक, 10 अप्रैल तक। बट अनिल जी ऊपर में अगर 48,500 के बियॉन्ड जाता है
तो इसमें प्रॉफिट लगभग 180 पॉइंट्स का हो सकता है। तो एक अच्छी 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है। सो 48,200 का कॉल खरीदे, सामने एक लॉट डेफिनेटली बेचे 48,500 का टू हेज द रिस्क। 48,200 का कॉल ऑप्शन खरीदें, 48,500 का बेचें 120 की लागत में। ये आपके लिए स्ट्रेटजी बनेगी, ये राय है जय की तरफ से। आइए एक पालिया साहब भी अपनी स्ट्रेटजी दे रहे हैं। पालिया साहब बताएं सर। तो आई थिंक अनिल जी, जो स्टॉक हमें पसंद आ रहा है उसमें सिटी यूनियन बैंक पे यहाँ पे फोकस रखना चाहिए। स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बना है और स्टॉक में जिस तरीके से ये वीकली चार्ट पे देखें तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना है और ये स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को अपर क्रॉस करने के लिए हमें लगता है कि यहाँ से रेडी होते हुए दिख रहा है। सिटी यूनियन बैंक में अपसाइड के टारगेट 165 168 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, और स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो करीब होगा 154 के आसपास। वन के स्टॉप लॉस से खरीदें सिटी यूनियन बैंक। और देख लेते हैं वागले साहब को क्या है पसंद, बताएं सर। अनिल जी, टाटा केमिकल्स में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ है। 114850 का करंट भाव है। 1135 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 14-15 रुपए की रिस्क होगी। टाइम फ्रेम 1 से 2 दिन, मे बी मंडे ट्यूसडे। आपको 1200 का पहला टारगेट, 1220 1225 का दूसरा टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए राय खरीदारी करने की वागले साहब की तरफ से। टाटा केमिकल पर आती हुई दिख रही है ये पूरा का पूरा एक्शन। बाजार मजबूती के साथ टिके हुए हैं। इंटरेस्टिंगली बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी डे हाई पर, मिड कैप इंडेक्स डे हाई पर, स्मॉल कैप इंडेक्स डे हाई पर। तो ब्रॉडर मार्केट और बैंक निफ्टी में तेजी है। निफ्टी भी अब बेहतर होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपना कंजेशन जोन जो है 22,500 22,525 के आसपास आकर अटक जाता है, वहां पर है। लेकिन बग्गा साहब से एक चीज और पॉलिसी के बारे में जानना चाहता हूँ सर। बार बार लगातार गवर्नर साहब ने आज नॉर्मल मॉनसून की बात की है। इतना मॉनसून पर जो उनका फोकस और जो जोर दिया था, क्या वजह, उससे क्या समझे हम? दो बहुत पॉजिटिव्स निकले इसमें। एक तो बोले रूरल डिमांड में रिकवरी आ रही है, लीडिंग इंडिकेटर्स दिखा रहे हैं आपके कि रूरल डिमांड कैचअप करे। अर्बन तो बहुत अच्छा है ही। ये प्रॉब्लम चल रही थी अनिल जी, एफएमसीजी हो चाहे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो, टू व्हीलर की खपत हो, ये रूरल डिमांड जो रिकवरी नहीं थी। और जिस तरह से बोला रबी का क्रॉप अभी कट गया, बैसाखी आ रही है 14 अप्रैल को और कटने लग गई है फसल, तो रबी क्रॉप का जो इन्होंने एस्टिमेट दिया वो अच्छा था। तीसरा बात, जो मॉनसून इतनी अच्छी नहीं रही पिछले साल, इस साल बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो एल नीनो इफेक्ट जो होता है 2-3 साल भी चल सकता है। तो वही शौकत दादा भी जो कह रहे थे शुरुआत में कि जून तक वो घटने की पूरी उम्मीद है। ला नीना आता है जिससे अच्छी मॉनसून। 3 बारी बोले ये के एक्सपेक्टेशन ऑफ नॉर्मल मॉनसून, 3 बारी अहमियत दी। वो रूरल डिमांड के लिए भी अच्छा है, क्रेडिट ग्रोथ के लिए अच्छा है, ओवरऑल इकोनॉमी को सुदृढ़ करने में और इन्फ्लेशन को काबू करने में ये चारों तरफ से नॉर्मल मॉनसून बहुत ही पॉजिटिव रहता है इकोनॉमी के लिए। तो एकदम बिल्कुल। तो एक तो ग्रामीण इलाकों से मांग फिर से बढ़ने के संकेत आते दिख रहे हैं, और अगर मानसून ठीक रहा तो ये बड़ा फायदा होगा, इसीलिए ज़्यादा फोकस मानसून पर रहा है। स्वागत सर ने थोड़ा सा अपना स्टैंड बदल दिया सर, अक्टूबर से दिसंबर में पहुंच गए। आप उनके साथ ही हैं, साथ ही रहो सर। नहीं, मैं साथ ही रहता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ एक्चुअली, उनसे पूछ लेता हूँ पहले। तो ये सही बात है अनिल जी, जब इकोनॉमी और नॉमिनल ग्रोथ अगर आप देखें 11-12% का नॉमिनल चल रहा है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ आपको 15-16% दिखेगा। इस माहौल में रेट कट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन्फ्लेशन ना भी अगर आप देखें, बट इन्फ्लेशन अगर तेजी से गिरती है, अगर जैसे तेल की कीमतें काबू में आ जाएं, 22 लाख बैरल ओपेक प्लस आप नहीं डाल रहा है रोज के, 20 लाख और बैरल सऊदी के पास कैपेसिटी है, तो 40 लाख बैरल ये प्रोड्यूस नहीं कर रहे अभी। होपफुली कुछ प्रेशर डलेगा बाइडन से, उनको भी रीइलेक्ट होके आना है, और इन्फ्लेशन बढ़ी तो बाइडन के लिए खतरा है, इसलिए वो आई एम श्योर पीछे से कुछ ना कुछ प्रेशर डलेगा। थोड़ा सा भी सप्लाई बेटर हो जाए तो ये तेल की कीमतें तेजी से नीचे आती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये पूरा का पूरा एक्शन आपके लिए, देखिए ये सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पे आपको ये देखने को मिलेगा कि बग्गा साहब जैसे इतने रेस्पेक्टेड सीनियर दुनिया भर के हमारे बाजारों के इतने बड़े विशेषज्ञ हैं, लेकिन पूरी क्रेडिट और रेस्पेक्ट पूरा स्वागत सर को आप भी दे रहे हैं। ये सर यही चीज़ हम आपसे सीखते हैं, जो आगे हमारे सारे पैनल में भी आपको नजर आती है कि सारे पैनल वाले एक्सपर्ट्स एक दूसरे का पूरा सम्मान, पूरा मतलब सबके अपनी अपनी एक एक्सपर्टाइज है, लेकिन किसी की ये
मतलब ये बड़ी चीज़ है जो आप हमेशा देखते होंगे कि सबका एक दूसरे के साथ जो तालमेल है, जो सम्मान है, वो गजब का है और हम आपसे सीखते हैं। तो सर आपने आज दिल खोल के तारीफ की है सौगत सर की, तो बिल्कुल। और सौगत सर इसीलिए देश में वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं, क्योंकि उनकी आंकड़ों के साथ साथ इकोनॉमी पर और पूरी देश भर की स्पेशली रूरल इकोनॉमी पर भी बड़ी गहरी पकड़ है। एक बार जल्दी से बाजार में आपको बता दूं, 22,500 पर निफ्टी आया है, 50,000 पर इस वक्त मिड कैप इंडेक्स आया है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी सेंचुरी मार चुका है। तो धीमे धीमे मजबूती बढ़ती हुई दिख रही है। आइए पॉलिसी पर ही आपकी मुलाकात करवाते हैं देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विनी तिवारी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अश्विनी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। सबसे पहले पॉलिसी पर आपका पहला रिएक्शन उम्मीद के मुताबिक रही सर? नमस्कार अनिल जी, हाँ बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक रही। ये पॉलिसी, हमें कोई भी रेट कट या अकोमोडेशन स्टांस वगैरह चेंज करने की कोई उम्मीद नहीं थी और वही हुआ। बिल्कुल। थोड़ी थोड़ी डिपॉजिट ग्रोथ आने लगी है इस क्वार्टर के। हम कुछ बैंक्स के जो अपडेट देख रहे हैं इस तिमाही के, क्या आपको लगता है कि लिक्विडिटी के लिए पर्याप्त प्रयास किए गए हैं पॉलिसी में, या फिर थोड़े और होने चाहिए? नहीं, जैसा गवर्नर साहब ने कहा कि लिक्विडिटी को वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं, और जहां जब वो शॉर्ट हो रही थी मार्च के शुरू में तो सरप्लस हो रही थी तो ऑक्शन किए, और जब बाद में शॉर्ट हो रही थी तो उन्होंने थोड़ा दूसरे रिवर्स ऑक्शंस किए। तो उस तरह से करके वो बराबर मैनेज कर रहे हैं। उनके हिसाब से अभी भी कोई विशेष इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, जैसा जरूरत पड़ती जाएगी वो करते जाएंगे। लिक्विडिटी, आई मीन, ये जो खास चीज यही है कि डिपॉजिट ग्रोथ जो है उसको ही अब आगे बढ़ना है, क्योंकि पिछले 7-8 क्वार्टर से डिपॉजिट ग्रोथ लोन ग्रोथ से नीचे चल रही है, परसेंटेज में भी और एब्सोल्यूट लेवल में भी। तो एक मतलब एक टाइम आ ही रहा है कि जब सब बैंकों को डिपॉजिट पे ज्यादा ही ध्यान देना होगा। ठीक बात है। एक और बात गवर्नर साहब ने बड़ी जोर देकर कही हुई है कि ग्रामीण इलाकों में मांग थोड़ी सी बेहतर होने के संकेत आ रहे हैं और उम्मीद करें कि मानसून भी ठीक रहेगा। देश के सबसे बड़े बैंक होने के नाते आपकी पूरे देश भर में जबरदस्त पकड़ है। क्या कुछ संकेत आपको भी ऐसे मिल रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों से इकोनॉमी और मांग थोड़ी सी बेहतर होती दिख रही है? जी बिल्कुल दिख रहा है, और हमारी जो लोन ग्रोथ एग्रीकल्चर के लिए है, कृषि के लिए, वो पिछले साल जो अभी खत्म हुआ, नंबर तो मैं नहीं बता सकता, बट बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। और हमें आगे भी दिख रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं, स्वयं सहायता समूह, और इसके अलावा जो एफपीओज हैं, तो रूरल में काफी इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, रूरल में काफी ग्रोथ की डिमांड भी है। तो हम क्रेडिट ग्रोथ काफी अच्छी देख रहे हैं रूरल में। रूरल पर क्रेडिट ग्रोथ काफी अच्छा है। गवर्नर साहब ने थोड़े समय में तो पिछली 1-2 पॉलिसी में प्रयास भी किए थे कि पर्सनल लोन की जो ग्रोथ है वो लिमिट में रहे, लेकिन कॉर्पोरेट लोन की जो ग्रोथ है वो मजबूती से बढ़े, यानी कि प्रोडक्टिव लोन्स ज़्यादा दिए जाएं। क्या उसका इम्पैक्ट, क्या उसका असर आप बैंकिंग सिस्टम में देख रहे हैं, फॉलो हो रहा है सर? जी, हमारे यहाँ भी कॉर्पोरेट ग्रोथ बहुत अच्छी रही है इस साल, और अभी भी हमारी पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है। और पहले होता था कि सैंक्शन होने के बाद में लोन डिसबर्स नहीं होता था कई बार, लेकिन वो अब काफी कम हो गया है। तो कुल मिला के कॉर्पोरेट यूसेज लोन ग्रोथ में काफी अच्छा हो रहा है, तो हम उसको देख रहे हैं। जहां तक पर्सनल लोन वगैरह की बात रही, तो आरबीआई ने स्टेप्स लिए हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, और ये कहा है कि इसको संभल के दीजिए, यानी कॉशियस के साथ दीजिए, क्योंकि ये डिमांड ऐसी है। पर्सनल लोन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐसी चीज है कि सबसे आसानी से मिल जाती है कस्टमर को, तो उस प्रोडक्ट को तो बचा के रखना है, लेकिन एट द सेम टाइम ओवरबोर्ड नहीं जाना है, कॉशियसली करना है। तो आई थिंक उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट आया है, और सभी बैंक उसको ध्यान से देख रहे हैं। रिस्क वेट बढ़ गए हैं तो उसको उसके हिसाब से प्राइसिंग भी इम्प्रूव कर रहे हैं उसके बाद उस केस में। अश्विनी सर, आपको क्या लगता है, क्या अब ब्याज दरें घटाने का समय आ गया है, और यदि नहीं तो कितना समय लगेगा? आपका क्या अंदाज हो सकता है? क्या इस साल, इस कैलेंडर ईयर में उम्मीद रखी जाए कि ब्याज दरें घटेंगी हमारे यहाँ? हमारा जो इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट है उसका भी व्यू था कि Q3 में घटना चाहिए, लेकिन आज उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला, जैसे वो बोलते आ रहे हैं गवर्नर साहब, कि जब तक 4% सस्टेनेबल इन्फ्लेशन नहीं रहेगा तब तक हम अकोमोडेशन विड्रॉल के बारे में नहीं, इसको चेंज नहीं करेंगे और रेट कट के बारे में नहीं सोचेंगे। तो मेरा ख्याल है कि Q3 तो टुवर्ड्स फैग एंड वैसे ही है, हो सकता है थोड़ा और आगे बढ़ जाए, क्योंकि अनसर्टेनिटीज तो इकोनॉमी में, इंटरनेशनल इकोनॉमी में बनी हुई है। तो हमारा ख्याल यही है कि मतलब बहुत जल्दी नहीं होगी इसमें रेट कट में। और हम ये देख रहे हैं चूंकि डिपॉजिट्स में प्रेशर है, डिपॉजिट रेट्स बढ़ रहे हैं, इसीलिए लोन रेट्स भी आसानी से कम नहीं होने वाले हैं। गवर्नर साहब ने ये भी कहा कि जो पॉलिसी ट्रांसमिशन है वो अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है, यानी पूरी तरह से उनके हिसाब से जो इंटरेस्ट रेट्स का मूवमेंट होना चाहिए था वो पूरी तरह से हुआ नहीं है। तो हमें नहीं लगता कि अभी इंटरेस्ट रेट कट जल्दी में होने वाला।
ओके, तो ब्याज दरें जल्दी से नहीं घटेगी, ये बात सही, लेकिन पॉलिसी उम्मीद के मुताबिक रही है। अश्विनी जीवानी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और पॉलिसी पे विस्तार से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एसबीआई के एमडी बताते हुए अपनी पॉलिसी पर अपनी राय के बारे में। आइए, बाजार मजबूती के साथ टिके हुए हैं, बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, डे हाइस पर बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में विदा लेने का वक्त है। पॉलिसी के हमारे खास मेहमानों से अजय बग्गा सर, शौकत भट्टाचार्य साहब, जय ठक्कर और विश्वास सेठी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पालिया साहब का, कुणाल जी, राकेश जी और वागले साहब का भी, और बाकी हमारे सारे खास मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। पॉलिसी की इस खास कवरेज में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। जय हिंद। $16% year-on-year growth. Relax, Vicky. Complicate नहीं. Compare. 16% year-on-year growth. Relax, Vicky. Complicate नहीं. Compare कर. और फिर decide कर. Stock Edge, my personal research app that gives me daily market updates, super smart scans, ready-made investment strategies, tutorials, and so much more. Stock Edge, self is smart. Dude, market 2,000 points down. मेरे portfolio का क्या होगा? Bro, rumors पर नहीं. Market updates पर ध्यान दे. ये देख. Stock Edge, my personal research app that gives me daily market updates, super smart scans, ready-made investment strategies, tutorials, and so much more. Stock Edge, sell is smart. Bro, target 370, super upside potential. खरीदे? Forget the buy, focus on the why. ओए, तू खुद से बातें क्यों कर रहा है? Stock Edge, my personal research app that gives me daily market updates, super smart scans, ready-made investment strategies, tutorials, and so much more. Stock Edge, sell is smart. पाड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। AMD powers the world's fastest supercomputers and offers reliability, security, and unmatched compatibility. Elevate your business productivity with AMD EPIC.